Hello, friends. Let's begin a new episode of idioms. Today's idioms are very interesting. Let's begin. Let's learn. So, the first one is busman's holiday. Really interesting one, and it means spending your free time doing the same thing you do during working hours. आपने छुट्टी लिया है या आपके ऑफिस में छुट्टी है, लेकिन आप रिलैक्स नहीं कर रहे, बल्कि आप ऑफिस का ही या जो भी आपका प्रोफेशनल काम है, आप वही छुट्टी में भी कर रहे हैं. Though you have taken a leave from work or it's your weekday off, but still at home, instead of relaxing, you are doing your same old routine work. Such a case or situation is called a busman's holiday. तो हुआ ये था that in 1800s or early 1900s in London, buses were pulled by horses. Some bus drivers loved their horses so much that on their days off from work, they would ride on their own buses just to make sure that the other bus drivers who have taken their place for that particular day of leave took good care of the horses. Because they were so much in love with those horses. उन्हें उन horses से इतना प्यार था कि जबकि उन्होंने छुट्टी लिया था, लेकिन फिर भी वो ये चेक करने आते थे कि उनकी जगह जो भी बस ड्राइवर बस चला रहा है, एटलीस्ट वो अपने सामने देखते थे कि वो एनिमल्स को वो हर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हॉर्स को हर्ट नहीं कर रहे हैं. सो दैट मीन्स दे वर सो इमोशनली अटैच्ड विद द horses, and this habit got to be known as busman's holiday. और आज भी ऐसे जब हम लोग, बहुत बार होता है कि हम छुट्टी लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हम लैपटॉप खोल के बैठ गए, वही हम ऑफिस का काम कर रहे हैं. अगर हम शेफ़ हैं, हमको खाना बहुत अच्छा बनाते हैं हम होटल में, हम वापस आ गए घर पे, हमने छुट्टी लिया है, लेकिन हम वही काम घर पे भी कर रहे हैं सेम. तो तब बोला जाता है इट्स अ busman's holiday, doing the same work which you are doing at office or wherever you are working, any professional work, वही जब आप repeat करते हैं, that means आप घर पे relax नहीं कर रहे हैं, you are again doing the same work, then it's such a situation is known as busman's holiday. ये हम लोगों के साथ अक्सर होता रहता है. किसी भी आप प्रोफेशन में हैं, आप बहुत कम प्रोफेशनल ऐसे होते हैं, एरियाज़ होते हैं जिसमें आप छुट्टी लेकर भी एकदम टोटली रिलैक्स्ड रहते हैं. वेरी रेयर. आजकल का तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है. ये देखिए इस स्लाइड में लिखा है, एज अ प्रोफेशनल शेफ़ कुकिंग ऑन माई डे ऑफ फेल्ट लाइक अ बसमैन्स हॉलीडे. ठीक है. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल idiom, interesting idiom. Please do learn it and start using it, applying it whenever you can. Now we start with the second idiom, burn the midnight oil. So here it doesn't mean that you are actually, just trying to burn the lamp. No, it doesn't mean that कि आप रात भर उठ के आप लैम्प जला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इसका मतलब है to stay up very late at night studying or working. Understood? So now here it is written, I have got to get this report finished by tomorrow, so I guess I'll be burning the midnight oil tonight. मतलब हमको ये रिपोर्ट नेक्स्ट डे सबमिट करना है, इसलिए हमको आज सारा रात बैठ के काम करना है. ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में लोग जल्दी अपना काम काज करके जल्दी ही सो जाते थे, लेकिन जब किसी को देर रात तक काम करना होता था
या पढ़ना होता था तब वो लैम्प जलाता था. So, this saying goes back to the days when lamps were lighted by oil and people went to bed earlier than they do today. When you burned the midnight oil in those days, you were up late working or reading by the light of an oil lamp. So, like example, I have a test tomorrow, so I plan to burn the midnight oil tonight. Means now this idiom signifies someone doing hard work. So whenever you have to do some, you have to put in more labor, more hard work. So that is the time, the late nights are the time when we give more, devote more time to the work which is pending or needs to be completed. Even it can be a test, exam, when we are, awake till late nights and we keep preparing for our tests or exams. So that means we can say that you should burn the midnight oil for better result or keep doing hard work. So this is how this idiom burn the midnight oil is supposed to be used. Now in the slide you can see it is written, Dennis has been burning the midnight oil trying to finish this report. So she must be exhausted. So it means to stay up late working on a project or task. The phrase refers to outdated practice of using an oil lamp. Nowadays we don't have oil lamp, but this is how the phrase was used, because those days we had oil lamps. अब तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट है, तो डेफिनेटली हम लोग अभी, लेकिन वो चला आ रहा है पुराने ज़माने से, वो बर्न द मिडनाइट ऑयल का idiom चला आ रहा है. So let's recap. We learned two beautiful idioms today. What did we learn? The first one is busman's holiday, and the second one is burn the midnight oil, burning the midnight oil. So I'm sure all of you have understood. So learn and enjoy.